So today we have a special guest, Asma Waqar from Crave the Caterers. And hi, Asma, how are you? You're muted. You need to unmute yourself. Yeah, I think nahi, abhi bhi nahi. Wait a second. Now, yeah, now it will work. Is Hi, it okay? Asma. Yeah. Hi, Hamza. How are you? I'm good. How are you? I'm well, and thank you so much for inviting me today. नहीं मुझे Uh, I went through the Instagram because I never met you ठीक है, but I went through the Instagram. I was like नहीं, I need to talk to her. I need to see what's her secrets and then maybe like apply to my business as well. So, no. so You guys are doing a great job. It's an honor for me to be invited by you, by the way. So I just want to talk कि आपने business, like let me first tell you guys कि Asma and her sister Sanya, right? Sanya. Right. Yeah, Sanya. Sanya. They have a restaurant by the name of Sweet Affairs, and उसके बाद after starting the restaurant, she said कि उनको orders आने शुरू हो गए, and then she started catering, ठीक है? And tell us more about कि किस तरह restaurant कैसे start किया, restaurant के बारे में. Around 2011-12 में घर Yeah. से Sanya started. Yeah. And what happened was we were making, she did a course from Dubai, and Okay. she came back and she was making all these amazing cakes, and my friends were ordering from her. So we were all partners in Sweet Affairs, hum sab siblings, Okay. five of us. Okay. So, and my bhabhi also. Okay. So it's like a family business. So we're really into it, and it's like our baby. Okay. So that's how it started. Then we opened a very small coffee shop in Gulbarg, Okay. and which is a flagship store. जो अभी भी हमारी वही एक branch है right now. उसके बाद we extended it to हमें 2 branches खोली, फिर हमने 3 खोली माशाल्लाह से. But thanks to COVID right now we just have 1. So फिर उसके बाद हमने सोचा, because we're such foodies ourselves, so हमने सोचा कि हम जो है ना सिर्फ coffee and bakery items are no fun. So सन्या का कोई trip लगा थाईलैंड, उधर उसने बहुत research की brick oven pizzas पे. वहाँ से हमारे brick oven pizzas शुरू, and they were just a hit. I don't know about whoever is listening to me, I don't know अगर वो Sweet Affairs आप लोग आए हुए हो, लेकिन literally line लगी होती थी pizzas के लिए, and nobody was doing it in the world. और customized cakes हमारे बहुत famous थे. तो वहाँ से शुरू हुआ. Then I joined, I was always a part of it, but actively I joined around 2014 के end में. So we opened another branch in phase 5. Then हमें बहुत catering के orders आना शुरू हो गए. So I automatically, because I don't know, somehow it's second nature to me, because we host a lot of events at our own house, shadiyan, with 3 sisters and a lot of family members. So we're just throwing dinners all the time. So I feel it just came naturally to me. My catering, hosting dinners. So then somebody asked कि 50 लोगों का आपने को बहुत amazing dinner करना है, वो किया, और next हमें क्या हो गया, 1000 लोगों का order मिल गया उसी family से. So that was, they loved the food so much. They said हमारा 1 महीने में वलीमा आप करें 1000 लोगों का. अच्छा ठीक है. So that was 2016. Like, was it that scary for you? Because I remember जब मैंने start किया था तो ये था कि 25,000 rupees मुझे याद है पहला order था, उसके बाद again 25 lakh rupees का order आ गया for the event decor. तो were you scared कि क्या? I was so overwhelmed. I couldn't sleep. I'm not exaggerating. असल में रातों को नींद नहीं आती, because इतनी बड़ी responsibility है. देखो, खाना एक ऐसी चीज है, आप अपने घर में देखो, आप एक फैमिली टेबल पे बैठी होती है, खाना बन के आता है, एक बोल रहा होगा ओ कितने मजे का है, एक बोल रहा होगा क्या इसमें नमक ज्यादा है, अच्छा नहीं बना. मतलब इट्स जस्ट सो हार्ड टू प्लीज एवरीबडी. पर गर्मी सर्दी उसको मैनेज करना, उसकी स्टोरेज को करना मैनेज, ये बड़ा मुश्किल काम है. किसी की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह आज तक खराब नहीं हुई. मेरे लिए सबसे बड़ी, हर नमाजों में आई थैंक अल्लाह मियां कि शुक्र है किसी की तबीयत कभी नहीं खराब हुई. because आप कितना ह्यूमन एरर का बहुत चांस है ना इस बिजनेस में, because you're dealing with human beings, and it's not machines के साथ तो आप नहीं काम करे कि कभी कुछ गलत आपने फिक्स कर दिया एक नंबर, वही प्रोडक्ट निकल रहा है. आपको 1000 लोगों के लिए पता नहीं 500 स्टाफ होता है आपका, उनके लिए आपके साथ आप काम कर रहे हो, तो बस you really have to be very alert. It's a very stressful business, as I'm sure you also know. Yeah, I know. But food का ये होता है कि food का तो ये होता है, एक बार जो कि 18 साल से मेरा ये शेफ है, तो हम लोग पॉलिटिकल फैमिली से हैं, तो वो पहले ना मेरे नाना अबू का ये था, एमएनए थे,
So आते रहते थे 300 गेस्ट, उसको ना बनानी आती थी देगें वगैरह. So he was very good at देसी food. But फिर my mother, she went to अवारी में शायद क्लासेस होती थी. फिर हम लोगों ने सारी रेसिपीज निकाली. There's so many recipes. अब तो नेट पे भी इतनी अवेलेबल है. Interest is like keeps Yeah. me awake all night. Yeah. So इतनी अवेलेबल है. तो फिर हम लोगों ने फिर ट्रेन की. फिर ये मेक श्योर करना कि हर दफा you have the same kind of taste. वो फिर हमने फिर like we No, wrote it down. consistency is the key. Yeah. That is the whole game. कि you have to be consistent in जो खाना आप लोगों को एक दफा खिला रहे हो, it can't change. That's not an option. सही. And This is the main thing. दूसरी चीज मैं आपको उससे पूछना था कि जो टीम है, लेट्स सपोज कि आप एक रेसिपी लेकर आते हो एंड टीम के साथ आप डिस्कस करते हो, वो क्या प्रोसेस होता है कि एक रेसिपी नई कोई डेवलप करनी है? अच्छा, सो हमजा हमारे साथ है कि सनी और मैंने ना कभी किसी कंसल्टेंट को नहीं हायर किया. मे बी आई शुड हैव, but we didn't have that concept, and you know it was just our own baby, so we were doing everything ourselves, from safai se leke costing se leke menu development se leke. And Sanya's mashallah is really good at it. She's 12 years younger to me, and she's the most smartest person I know, and the most hardworking. So I learned a lot from her actually. So हम लोग बैठते हैं, एक decide करते हैं. हमारा बहुत एक passion है कि to be innovative. I don't want to keep repeating things again and again. So yes, we have a very good chef, mashallah, alhamdulillah. He's been with us for the past 5-6 years. So he understands hamara concept, my language. So we sit together, think about a food, uska recipe ko lock karte hain pehle, फिर उसकी पूरी costing होती है, फिर उसकी पूरी training होती है. उसकी training एक बंदे से तो आपका पूरी company नहीं चल सकती ना. Company should not be dependent on people. मैं नहीं हूँ, it still be going on, right? So उसके लिए आपको recipes lock करनी है. उसके bombs बनते हैं, बहुत उसके पीछे एक process होता है. And then once it's locked, then that's how we promote it, उसको market करते हैं, stuff like that. This season ना, इस season में मेरा जो focus है ना, that's towards the catering. ठीक है, मेरा ज़्यादा खाने की तरफ focus है, because decor का ये होता है कि decor में every time a client demands something new, but catering is something जब ये होता है आपको पता होता है कि इतनी cost आएगी, इतना वेट देना, ये चीज. मेरा सारा उस पे है. तो मैं जो प्रोसेस कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि क्लाइंट सा मेन्यू सिलेक्ट किया, एक टेस्टिंग सेशन रखा, उनको बुलाया, दिस इज व्हाट. तो ये मैं टैक्टिक यूज कर रहा हूँ. एंड एक दफा ये हुआ था कि मैं उनको कभी वो नहीं पहले ये था कि इवेंट्स पे बुलाता था कि आप इवेंट्स पे आके खाना ट्राई कर लो, बट जो क्लाइंट होते थे उनको इश्यूज होते थे. ठीक है, प्लस ये होता है कि हर इवेंट पे क्लाइंट के अकॉर्डिंगली एक टेस्ट बनता है कि ऐसा खाना होना चाहिए. एंड वो उनको फिर मुझे समझ आ गई थी कि बेहतर यही है कि यहाँ बैठो, उनसे पूछो कितनी नमक मिर्च ज्यादा होनी चाहिए, एंड इट्स बेटर कि आप 1-to-1 टॉक कर रहे हो. So this is a strategy it works also, but sometimes देखो आपकी अपनी cost इन चीजों में 100% when you're a startup and you're starting a business, आपको इस तरह की बहुत चीजें करनी पड़ेगी. ये तो part of the game. हाँ, ये करनी है, ठीक है. Once आपका टेस्ट, अब जैसा हमारा माशाल्लाह, I don't know how above 600-700 caterings, तो या more than that, I don't know. तो हमारा जो word of mouth है ना, वो सबसे बड़ी आपकी marketing होती है. जितनी भी आप Facebook, of course, ये सारा सोशल मीडिया तो है ही है, बट मेरे क्लाइंट्स आते हैं बिकॉज दे लाइक द फूड they've had at a, ज्यादा यही होता है कि हमने उधर आपका खाया था खाना. सो तो मेरे साथ ये हो रहा है कि जो मेन्यू मेरे डेवलप हो गए वो ऑन रिपीट जा रहे हैं. मेरा दिल होता है कि कुछ तो चेंज कर लें, like we were saying, let's not do the mutton punna anymore, let's just try something else. True. But people want the same thing again. जहाँ तक आप बोलो टेस्टिंग, मैंने बहुत लोगों को टेस्टिंग करवाई है. Depends on the clients. Some are usually 90%. I love mashallah said people are really nice. लेकिन कुछ आप, since it's a session जहाँ पे आपको बताना चाहिए कि आपकी इसकी flip side क्या है. It's not all glamorous and not at all glamorous actually. It's so you do come across people जो आपको tasting करते जाएंगे and then आपको order भी नहीं देंगे. True, ये भी है. And so I've kind of stopped doing that. I do favor कर देती हूँ. If somebody asks me, I charge them now. Okay. उनको सबने मुझे लाइव स्टेशंस में बात ही कुछ और होती है. आपको कोई गरम खाना आपके प्लेट में डल रहा होता है, उसका टेस्ट, और वो मैं कहीं से बना के थोड़ी देर बाद लाऊंगी. फॉर स्वीट अफेयर्स का जितना मेन्यू है या वेस्टर्न या पास्ताज, और वो तो मैं टेस्ट करवा सकती हूँ, बट बारबेक्यू वो मैं बनवा के तो नहीं कर सकती. मैं हर चीज लाइव कैसे टेस्ट करूँ. So I've kind of stopped doing that. Desserts, yes.
definitely they can always come and taste the desserts and Yeah. cakes or the wedding cakes होते हैं उनके flavors की हम tasting देते हैं. That's people love that. That's not a problem. Yeah, but you know, you have to, I must say, you have to treat this as a business. That's true. Okay, it's not, we're not doing anybody any favors. We're working really hard, and people have to realize कि हमारी actually रातों की नींद, हमारी family lives सब disturb होती. It is a business for us. It's a रोजी रोटी का है. So people also have to now realize that being a caterer or an event planner, it takes a lot of effort. Effort, true. A lot of hard. It's a whole industry. True. You know, people should start taking it as such. I think restaurant business, catering business, it is in the industry. और हमें इसके ऊपर बहुत अभी काम कर सकते हैं, बहुत potential है. We should do that. Are you like आपका एक तो question मेरा ये भी होगा कि आप क्या same resources use कर रहे हो for the restaurant as same as the catering business के अलग-अलग आप दोनों ने रखे हैं? So मेरे पास obviously एक edge है कि I have my own restaurant. Okay. So मुझे बहुत इससे edge मिलता है. ठीक है. But अगर if I imagine that Crave was an independent, you know, company, so yes, I would have had to have my own. We do have a catering kitchen, but the catering kitchen एक warehouse मेरा है अलग से. ठीक है. But sources, as in, do you mean the chefs and the cooks? So yeah, तो वो same है कि आप different रखे हैं? Same है, but हमने बहुत ज़्यादा 99% operations Crave के अलग किए हैं जो मैं handle करती हूँ, और restaurant तो वो restaurant के interfere नहीं करता. लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था तो हो रहा था ऐसे कि हम सब मिलके परचेज होती थी, वो एक इशुएंस बनती थी और इशू हो जाता था टू. लेकिन उसमें फिर आपके लूप होल्स बहुत होते हैं, जैसे शेफ्स या कोई भी आपका स्टाफ कैन से क्यों भाई फूड कॉस्ट इतनी ज्यादा क्यों, वो तो रेस्टोरेंट में यूज हो गया था, रेस्टोरेंट की फूड कॉस्ट क्यों यूज, वही वो तो केटरिंग में यूज हो गया था. तो ये सारे प्रॉब्लम्स हम जब फेस कर रहे थे, दैट्स व्हाई वी चेंज्ड द नेम टू क्रेव द केटरर्स बाय स्वीट अफेयर्स. एक तो इसलिए भी स्वीट अफेयर्स से सिर्फ डिजर्ट आता है, पता नहीं क्यों सबके दिमाग में, तो पीपल थॉट कि हम सिर्फ डिजर्ट की केटरिंग करते हैं. Because of the name, right? Sweet affairs. मेरे दिमाग में भी I remember मुझे याद है मैं अपने ना एक कोलीग के साथ गया था स्वीट अफेयर्स पहली दफा. मुझे ना मैं I was in Canada for 10 years, पर यहाँ आया मुझे खाना बिल्कुल नहीं पसंद था. So we went there and तब नया नया यहाँ पे skillet cookies का ना craze आया हुआ था. तो मुझे याद है मैंने tried that at Sweet Affairs, तो मुझे काफी like अच्छा लगा. And you guys had those cookie shots, milk shots. Those were our बहुत हमने with pride and hard work हमने उसके molds बनवाए. Cookie shot का मैंने कहीं देखा था न्यूयॉर्क में किसी का है. Then उसके अंदर flavors is like one of my favorite things. No, I've seen कि आप लोग like वो भी थे. I think आपने wooden pizza oven भी start किया था. Yes. याद है? हाँ, कोई और कर नहीं रहा था लाहौर में. I think maybe Kosa was doing it. Okay. Definitely Kosa and you know all of these restaurants ये तो हमारे mentors हैं. I look up to them. इनकी वजह से तो आप you know हम लोग ने भी start किया and खैर. So but pizza yeah wood brick जो oven का pizza वो तो Sanya started. I think nobody else was. हाँ, तो मुझे जब मैंने आया था मैंने कहा मुझे दिमाग में ये आया था because एक business wise आप सोच रहे होते हो, तो मेरे दिमाग में ये आया था कि these people are experimenting a lot. Always every single day we're experimenting. आपको रोकना पड़ता है. हमारे पास इतनी चीजों की, we make our own breads. Again catering, I use my own use my own. We make our own pizzas, we have our own coffee, we make our own gelato. So gelato पूरा plant is हमारे पास है. So many flavors. So हम catering में बहुत ज़्यादा gelato भी देते हैं. अभी जो एक बहुत बड़ी शादी हुई थी उसमें 2000 लोगों के लिए हमने repeat पे gelato दी थी. अच्छा ठीक है. That must imagine handling gelato and summers भी था. Obviously summer में सबका ice cream था. So वो जिस तरह उसकी transportation manage की थी, freezers नहीं मिल रहे, मतलब एक not an easy job, guys. Whoever is listening, you need to do it with heart and soul. So I just want to ask कि फिर जो ये सारी kitchen equipments होती हैं, so what's आप लोग कहाँ से source करते हो, ये एक चीज कहाँ से आती है? Different companies हैं अब, बाहर से भी हमारी कुछ आई नहीं है. यहाँ पर almost everything is available. Again, Pakiza, Ambassador, I think these are the two names, and a lot more. I recently went to Gujranwala to get a lot of equipment. I found my very nice chafing dishes from there, and इस तरह की चीजें भी होती हैं. लेकिन जो चूल्हे वगैरह and all of ovens वगैरह, वो अब everything you can get from here. अच्छा, I think I saw आपने अपनी branding भी शुरू किया on the dishes, like something. Yeah.
So मैंने वो चीज़, अब ब्रांडिंग के बारे में बात करते हैं, बिकॉज आपका, जो कि मैं देखा है कि अक्सर होता है केटरिंग कंपनीज में, ना एप्रन्स पे लोगोस लगे होते हैं, ना टोपी किसी ने सही पहनी होती है. सो हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट फॉर क्रेव द Team lead, टॉप पे? top number one. So every time at every event I sit with my team. और अब माशाल्लाह वो इतने ट्रेन हो गए हमजा, आई स्वेयर टू यू, अगर आप 6 साल पहले इन लोगों को देखते ना, सेम पीपल, मैं आउटसोर्स करती हूँ बहुत भी, लेकिन मेरी somehow वही टीम बन गई है. I mean they're not on my salary, उस पे नहीं है, मैं आउटसोर्स करती हूँ, लेकिन वही लोगों को मैं बार-बार, so they know my style also. If you look at all my videos you will see some very familiar faces. लेकिन उनके साथ जैसा मैंने काम किया ना, from their nails to their, because I cannot bear all of this. मुझे अभी तक ऐसा चलता है कि guys, you're in the hospitality business, if you want to look like you dress up and not look clean, that then you're not in the right business. It's just as simple as that. आपको बिल्कुल, आप दाढ़ी रखें, आप जो करना है करें, लेकिन आप इस बिजनेस में नहीं आ सकते, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में you have to look sharp. True. I mean, आपको अच्छा लग रहा होगा, गंदा सा आदमी आपको खाना सर्व करे, नहीं अच्छा लगता क्लाइंट को. So how can you so मेरे लिए बहुत important है, मतलब मेरा टची वो है ये सब्जेक्ट. So gloves, masks, अभी तो कोविड की सारे SOPs I make them follow, and before pre-COVID also my waiters and my staff सब लोग मुझे, मतलब इतने लंबे पैराग्राफ्स, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इज्जत देने वाला है, आ रहे होते थे कि आपके वेटर्स और स्टाफ आर अमेजिंग. So I really make an effort to train them. That is very extreme. मेरा सबसे ये होता है कि मेल मुझे स्टाफ मिल जाती है वेटर्स की, बट वेट्रेसेस यहाँ पे, जो ये जब क्लाइंट कहते हैं ना, हमें सिर्फ फीमेल वेट्रेसेस चाहिए, तो मैं नींद उड़ जाती है, और मुझे नींद नहीं आती. टेंशन आती है, मैं कहाँ से, जो हाँ, वो फीमेल स्टाफ का एक ऐसा है जो क्यों है प्रॉब्लम, मुझे आप प्लीज बताएं, मैं जानना चाहती हूँ. मैं खुद मुझे एक तो लगता है एक तो ज्यादा वो ट्रेन नहीं है, ठीक है. दूसरा ये होता है कि मुझे लगता है कि वो रैंडमली ना, मुझे जहाँ तक आता है कि जो वेटर्स होते हैं रैंडमली जैसे अपने फैमिलीज में से लेडीज को बुला लेते हैं कि मैनेज करने के लिए. मेरे ख्याल से तो ये इशू है. एंड अब जहाँ मुझे लगता है एटलीस्ट 3-4, या जिस तरह की आजकल विमेन एम्पावरमेंट में इतनी बात होती है, आई थिंक वेट्रेसेस हमें, मुझे ख्याल से हमें 3-4 होनी चाहिए, कि चलो 5-6 अगर मेल हैं तो 3-4 एटलीस्ट फीमेल्स हमें I would love for all women to be a part of this. I would love, मैं तो बहुत encourage करती हूँ girls and everything, but somehow I wish कि वो लोग भी इस बात को समझे कि it's a great opportunity, they should be improving themselves, but they don't listen. I don't know, and they have so much nakhra. You can't, मैं, आप सोचो हमजा, you can ask my team, everybody who's listening, you can go to Sweet Affairs, call my manager, my chef, ask them. They have seen me, picking up dirty plates from tables. I don't know if that's right or wrong. I'm still wondering, but this is how I work. So I am just, when I'm at a function, जब मेरे लिए एक catering event होता है, उस दिन it's not, yes, money is extremely important, but मेरे दिमाग में it's not the money. ठीक है, I want to make sure कि जो client है उसका ये event is a success. Okay. I will work with the event planner, the decorator. If there's any other caterer, I will work with them also. मेरी पूरी team orders हैं कि किसी को, दूसरे caterer को भी कोई चीज की जरूरत है, you have to provide them with whatever they want. ठीक है, so ये work ethics हम सबको develop करनी चाहिए. Please, no leg pulling. Everybody, सबकी किस्मत में जितना आना है उतना लिखा हुआ है. हम किसी leg pulling से हमें कभी भी कुछ नहीं मिलेगा. Wish, you should wish everybody the best, and I do on my team also. And so yeah, but पूरा वक्त प्लेटें उठाना, from back kitchen को देखना, front पे देखना, I do everything myself. Eventually maybe मेरे पास अगर इतनी अच्छी टीम हो जाए, और कोई ऐसा आदमी मुझे मिल जाए, या any person who takes care of my company the way I want it to be taken care of, so then मैं back up, मतलब I'm not saying कि आपको delegate. That are your kids. I think your kids, your children, आपके जो बच्चे हैं, I think that they are gonna. No, they're not interested at all. They're like, you're mad. What are you doing? So मुझे बस ये होता है कि since it's a family business, मुझे लगता है it's best कि आप family में ही इस चीज को रखो, because probably, let's see. But hard work आप कर रही होती हो, उससे अच्छा आप कुछ और ही कर लो. And I'm like, no, this is my passion. I love doing what I do.
नहीं, मुझे बस ये होता है कि मुझे हमेशा होता है काश मुझे अपनी तरह का एक और बंदा मिल जाए तो काम कहाँ से No. कहाँ पे पहुंच जाएगा, बट वो सोचते सोचते ढूंढते ढूंढते अब मैंने ये रियलाइज किया कि वैसा कोई All of these students who are listening to us, they should do this. They should do this, na? If they're really interested in making this their business, I think इसमें बहुत potential है. There's a lot of money if you guys yeah are looking for that. But hard work के बगैर shortcuts तो है नहीं life में. It is a lot of hard work. आपको अपना नाम बनाना पड़ता है. Branding की आप उसमें बात कर रहे थे तो Crave को from Sweet Affairs से Crave बनाना, it yeah took me a long time. But again, आपकी dedication, आपका hard work, आपकी honesty pays off, and luck. Obviously, luck will always be a factor. yeah sure, But ये तो है. dedication and hard work and honesty के साथ आप करो. This मतलब मैं खड़ी होती हूँ अपने कोई भी event पे, even if I'm starving, I don't eat. मुझे नहीं अच्छा लगता. मुझे लगता है, and you know, मेरे clients आके मुझे literally वो इतना प्यार कर रहे होते हैं, respect दे रहे होते हैं, but मेरे से ना मुझे लगता है this is wrong. This is True. not. I should not be eating. True. You know, छोटी छोटी बातें. इसलिए मैं अपने staff को भी यही सिखाती हूँ. Please guys, I will provide you whatever food you want, yeah but you cannot do this to a client. So all of these छोटी छोटी बातें होती हैं, फिर इसी से आपकी growth होती है, trust develop होता है True. clients का, and then you get more work and you know you make अच्छा, a name for yourself. मेरा तो होता है कि इवेंट के जब होता है, मैंने अपने भाई को भी बोला है because he is the one who manages during the event. मैंने उससे बोला है कि जो भी चीज बने ना पहले ट्राई करो, अगर कोई चीज खराब हो जाए स्पेशली इन द समर्स उसको डिस्कार्ड करो, किसी ना किसी तरीके से निकाल दो एक बार. तो आप बैक वर्क तो हाँ डिफरेंट चीज है, लेकिन जब आप खाना लग जाता है, हाँ मैं उसकी बात कर रही हूँ कि आपको अपनी इतना ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए कि अगर क्लाइंट, मतलब द क्लाइंट हैज टू कम फर्स्ट इन दिस बिजनेस, स्पेशली द कस्टमर इज ऑलवेज राइट, true. द हार्ड ट्रूथ. एंड सो यू हैव टू मेक श्योर कि उनका इवेंट उनके लिए बहुत स्पेशल होता है ना. हम हफ्ते में 10 इवेंट्स कर लेंगे, ठीक है, बट वो जो एक इवेंट है वो उस क्लाइंट के लिए तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ देयर, शादी हो गई, बारात, यू नो, सो उनके लिए तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना. उनको क्या फर्क पड़ता है हमारे 10 और है, हमारे लिए तो वो every single event is should be treated like it's the most event for us as well. अच्छा, So, yeah. अच्छा, दूसरी चीज आई वांट टू टॉक अबाउट इज जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने घर से स्टार्ट किया था एंड मैं ना सिंगल डिशेस बना के सेल करता था. इट वाज ड्यूरिंग रमजान एज वेल. आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऑर्डर्स मिलना शुरू हुए तो ये था कि मुझे चीजें आउटसोर्स में कर रहा था, लाइक क्रॉकरी कटलरी बाहर से लेनी, टेबल्स बाहर से लेने, वेटर्स बाहर से लेने. सो टेल अस अबाउट दैट कि जैसे कोई अब ये सारे स्टूडेंट्स हैं, दे आर स्टार्टिंग देयर बिजनेस, इन लोगों को तो आउटसोर्स करना पड़ेगी चीजें शुरू में. आई डोंट थिंक कि अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. टेल अस नहीं, अबाउट करना भी नहीं चाहिए. अब माशाल्लाह से पाकिस्तान में भी इतनी चीजें आ गई हैं, इतनी कंपनीज खुल गई हैं. आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड हुज, उनसे मैं रेंट करती हूँ हर चीज हर दफा. आई कांट, अब मुझे कल को 3,000 लोगों का आ जाए, मैं 3,000 लोगों की इन्वेंट्री खरीद के तो नहीं रख सकती. So there are companies who are helping us out a lot. उनका काम is to provide all of this, you know, crockery, cutlery, furniture, tents होते हैं, 100 चीजें. So I can't keep everything. So yeah, of course, there's no harm in outsourcing at all. ठीक है. So दूसरा मेरे दिमाग में आ रहा था कि सिंस हमारी ट्रांसपोर्टेशन इतनी ज्यादा होती है कि मैं सोचा था एक वेन्यू मैं फिक्स कर लूँ, वहाँ क्लाइंट्स को बुलाया करूँ, यहाँ पे अपना सारा खाना कर लें या इवेंट्स कर लें. So have you thought about कि कोई एक फिक्स वेन्यू मैं कर लूँ for Crave the Caterers? well, Maki, everybody keeps advising me कि Maki हो जाए. It's a very, very good idea. I'm not there yet. I don't know why, but I think it's a fabulous idea होना चाहिए. क्योंकि अक्सर clients आते हैं मेरे पास, उनका दिल होता है कि one stop shop हो. I should provide the venue, I should give the food, and I should give the decor, and they should just go home and relax. Yeah. So I think if a company can do that, if people can do that, that's a great thing. You should have your own venue, you should have your own जो आप कर सकते हो. That would be a great idea. Yeah, but I'm not doing that right now. I will. I think Let's see. हमारा तो ये जैसे I started with catering, now I'm into decor. हम लोगों ने पहले start catering से ही किया था अपना business. So अब decor पे आ गए तो मेरा ये होता है कि अब client कहता है जी photographers भी आप choose करके दो. मेरा होता है कि मैं उनको services वो सारी provide करता हूँ. And I think people and my students here as well, हम लोगों को we shouldn't let it go ये opportunity, because you can actually expand your horizons अगर आप different Definitely. and अब ये कि right now, so maybe if I had started all of this in my early 20s, probably. Yeah. So of course, 100% do. The whole world is your oyster. Just do whatever you can. Abhi karo, सब कुछ करो.
रिस्क लो. अगर आपने एक बिजनेस करना है, बिजनेस doesn't come without risk. फेलियर भी होगा आहिस्ता आहिस्ता. You can't just become a star overnight. Doesn't work like that. So And हम लोग 100%, I think it's a very good idea. One stop shop is a great idea. बढ़िया. But provided कि आप उसको फिर मैनेज करो ना सही तरह. मतलब अब डेकोर अच्छा है तो खाना खराब है, खाना अच्छा है तो डेकोर खराब है. You guys are doing great. I mean, I'm in awe of you. I have to come in. You should invite me to an event. I have to come and see. इंशाल्लाह भी आगे like next coming season. अच्छा, I feel कि अब जो अगला season आ रहा है, I feel it's quite busy for everyone. Inshallah, yeah. I can feel it. अभी से काफी ज़्यादा. Very excited. I'm excited as well. He wants to get married. कोई किसी की पिछले साल शादी नहीं, सब बहुत दुखी है. True. तो अब ये अब जो हो रहा है क्या क्या वो आ रहा है. And दूसरा ये कि September onwards we are planning to open an open air restaurant. जैसे कड़क खेल नहीं है इस टाइप का हम लोग रेस्टोरेंट सोच रहे हैं. बट इट विल बी जैसे होता नहीं है टेंट्स लगे हों, टीपीज लगे हों, बहुत रस्टिक थीम का. दैट्स इन द कार्ड्स एज वेल. So I think आपने रेस्टोरेंट खोला and then you went into catering. We are doing the opposite. All my best to you. Inshallah, it will work. मेरा भी my brother has an amazing restaurant. Online ही वो कर रहा है अभी. But मेरा भी ये है कि जैसे हम outsource की बात कर रहे थे तो मैं अपना usually देसी खाना outsource करती हूँ from his company, because again for me hygiene is very important. So I know the kitchen. I go there and I see the kind of food he's making and how he's making it. तो वो इतने सफाई से बन रहा होता है. उसके भी शेफ्स और कुक्स वो फुल मतलब सर से पैर तक साफ सुथरा, हाथ सारे SOPs फॉलो होते हैं. So amazing. His restaurant is called बहुत आला. And recently Kyoto के नाम से sushi भी उसने start किया. It's amazing. अच्छा ठीक है. तो मैं अपनी लाइव sushi stations भी देती हूँ catering में. Like basically हम लोग खाना जहाँ तक है we provide anything and everything. You want wagyu, you want lobsters, you want scallops, we can go there also. If you want only desi, only Japanese, कोई भी cuisine. So that's my forte. So I manage whatever the client wants. अच्छा, another thing I want to talk about is एक तो ये चीज़ है कि मेरा जो होता है ना, जैसे जो all the baking stuff है हम लोग outsource करते हैं, sushi भी outsource करते हैं. मेरे एक client ने मुझे खुद Kyoto पर recommend किया था, because this is going on record, but whatever. I personally don't like wasabi की sumo something. मुझे sushi पसंद है, but Kyoto में 2-3 लोगों ने कहा था. I was considering. I think उनसे बात भी हुई थी, but I think postpone हो गया था event. So they gave me a really good package. Usually, they gave me a really good package for the sushi. And सबको ये लग रहा होता है कि हम लोग in-house कर रहे होते हैं, but काफी सारी चीजें हम लोग outsource भी कर रहे होते हैं, इधर-उधर से उठा रहे होते हैं, because we cannot manage everything by ourselves. That's अच्छी सही नहीं. It works for me. It works for me. How can I keep so many chefs? True. Event I can't just, how am I supposed? जो आपकी कुछ fixed costs होती हैं, ठीक है, उसमें आपकी salaries आती हैं. आपका रेंट आता है, आपकी बिल्स आते हैं, यूटिलिटी बिल्स होते हैं, 100 चीजें. सो आई जस्ट फाइंड के और काफी शेफ्स हैं भी ऐसे, उनकी भी बहुत हेल्प हो जाती है. दे लाइक इट कि अगर हम उनको एक डेली वेज पे इवेंट आ रहा है तो उनको एक सर्टेन अमाउंट आप ऑफर करो और उनसे आप बनवा लो. दैट्स आई थिंक एवरीबॉडी डज दैट. या ओके. सो कुछ स्पेशलिटीज होती हैं आपकी, जैसा पिज्जाज हैं, मटन नहारी है, काफी चीजें ऐसी हैं जो हमारी इन हाउस हैं, which are what we are famous for. Desserts हैं, so वो तो हम इन हाउस ही करते हैं सब कुछ. हमारा इन्फिनिटी टेबल बहुत पॉपुलर हो गया था जियो न्यूज़. मैं देखा, I was there at the Master Tile's wedding. We did all of their so starters and दो ढोलकियां उनकी हमने 300-400 लोगों की वो भी की थी. And the dessert table was ours, and VIPs के सारे starters, soup and 9 किस्म के उनके starters थे, from prawns to bite-sized things. वो सब हमने किया था. And let's talk about food wastage. What happens? Food के जो होता है, जो बच जाता है, वो क्या होता है? अच्छा, nothing is thrown away. Usually client को हम दे के आते हैं, और वरना अगर if the client allows it, the staff eats. तो अल्लाह ना करे, मैंने बहुत खुद खड़े होकर अपना बैक किचन इस बारे में मैनेज किया. डिस्कार्ड में, केटरिंग में, रेस्टोरेंट में थोड़ा डिफरेंट होता है. रेस्टोरेंट इज एन एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन केटरिंग में ना आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी फूड कॉस्ट भी और अपनी वेस्टेज भी. ठीक है, क्योंकि अब मुझे इतनी आदत, मुझे पता है कि इतने सर्टेन अमाउंट ऑफ
लोग हैं उनको इतना किलो कितने ग्राम्स उनकी मीट जाना है क्या जाना है, तो हमारा इतना वेस्ट नहीं हो रहा। ठीक है। बचता जरूर है मगर वो हम दे देते हैं फिर उनके घर। Yeah, I think it's stuck. या आई थिंक वो आपके साइड से इशू आ रहा है। आई थिंक इट्स बेटर नाउ। So yes. Okay. So I'm gonna ask you a do you last. want the student class? Yeah, I'm gonna ask you a last Sure. question. उसके बाद what I'll do is I'll open up question answers for the students. So last question is let's say कि मेरी शादी आ रही है and let's create a menu together कि उसमें क्या होना चाहिए. So Are you? let's stick with continental. I feel कि आपको continental का ज़्यादा expertise है, ठीक है? So let's say starters में क्या what options do I have for the starter? Okay, so for example हम लोग start ऐसे करते हैं like अगर summers है तो welcome drink होता है, वरना हमारे बहुत amazing, that's also something we started and a lot of people have called me and asked me कि हमने भी ये करना है, तो मुझे बहुत खुशी होती है, like really big companies have called me and said कि हमें बताएं कि ये soup जो आप serve करते हो. I started serving soup in these really small espresso short cups. Okay. Winters. It was such a big hit, हमजा, क्योंकि nobody wants to वो जो प्याला पकड़ के तैयार लड़कियां वो समझ नहीं आ रही, आधा छोड़ रहे हैं जाया, obviously वहां पे जाया होता भी है, तो मुझे वो भी घबराहट हुई थी, तो अब वो शॉर्ट्स लेके बंदा फिर रहा होता है सूप के. So I would offer you, for example, if you're getting married in the winters, हमारी roasted garlic soup is amazing, wild mushroom soup is amazing, clear soups में Thai and hot and sour of course. I love Then French. huh? I love French onion. Can you do French onion? Oh yeah, we do French onion also. It's amazing. हमारी mulligatawny, every soups we do. We again सब करते हैं जो client को demand होता है हम वो कर लेते हैं, because again मेरे in-house है, chefs हैं. I try out the recipes myself and lock the menus myself. Okay. Personally मैं ये जो stage है ना, जब एक client मेरे पास आता है, वो पहला stage I am always there. Okay. अभी मेरा एक मैनेजर बहुत अमेजिंग ट्रेन हो गए, सो छोटी वाला जो है ना 30-35 वाला अब वो हैंडल कर रहे हैं. Okay. लेकिन 90% मेन्यूज मैं खुद क्लाइंट का बैठ के बना. Okay. ठीक है, फिर देन वी कम टू द स्टार्टर्स में अगेन हमारे जो सबसे पॉपुलर है वो स्मॉल पिज़ेट्स हैं. Okay. हमारे मशरूम एंड चीज पार्सल्स होते हैं विद मशरूम एंड चीज पॉकेट्स, उसके अंदर होता है लाइक दे जस्ट मेल्ट इन योर माउथ. अवन से वो गरम गरम निकलता है, उसी वक्त लाइव, हर चीज लाइव होती है बाय द वे. Okay. ये हाफ डन होके अगर मेरे केटरिंग किचन से चली भी जाती हैं, Okay. लेकिन मोस्टली सो हम लोग पूरा अपना किचन बनाते हैं जहां पे भी जाएं. ठीक है, दैट्स व्हाई मैं 30-35 वाले जो केटरिंग के होते हैं उसको इतना इनकरेज नहीं करती, बिकॉज मेरी फिक्स्ड कॉस्ट उतनी रहती है जो 100 लोगों पे. True. मेरी 35 और 25 में मेरा बहुत सो अगर 100 लोगों से ज्यादा है तो दैट प्राइस वो चेंज हो जाती है. 100 लोगों से कम में मेरी फिक्स, लेकिन पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड कोऑपरेट, क्योंकि मैं 3,000 का मेन्यू कैसे दे सकती हूँ 30 लोगों को 1,500 में 1,800 में. उनको तो दिमाग में दे राइट इन देयर ओन वे के हाँ कम लोग हैं हम इतना क्यों स्पेंड कर रहे हैं, बट वो उल्टा हो रहा होता है, क्योंकि मैं 15 लोगों के लिए क्या मतलब मैं 5 चीजें तो नहीं सर्व कर सकती ना, एंड पूरा मेरा किचन जाता है. सो एनीवे सो मशरूम चीज पॉकेट्स, पिज़ेट्स, tempura prawns. Okay. I haven't had breakfast or lunch right now, so मेरे मुंह में पानी आ रहा है. So yes, and then हमारे कल जिस तरह हमारा एक बहुत बड़ा लॉन्च था, उसमें हमारे बाइट साइज चीजें जाए, उसमें I had these wild cucumber with beetroot hummus. Hummus वो बहुत मजे का था, and then small sliders we can do like bite size. Okay. So these would be the starters. Let's say I would want mozzarella sticks. ठीक है, mozzarella sticks. Let's do that. And yeah, okay. Mozzarella के साथ I think prawn tempura would be nice, like cheese and tempura meat हो जाएगा. So French onion soup, prawn tempura and mozzarella sticks. ठीक है, ये हो गया. And then let's go to the main course. मैं लिख रहा हूँ साथ साथ. Let's go to the main course. Main course में I think I really like some. एक सेक्शन हम शुरू कर सकते हैं फ्रॉम जिस तरह देसी कुछ चीजें. मिक्स मेन्यू इज I think stuck हो गया. Hi guys, can you hear me?
Okay. But not Asma, right? Yes. Okay. I'm just gonna wait for Asma and see. So guys, how's मैं pause कर देता हूँ. Can you hear me? Okay. So we are back at it again. So let's talk about mains में. Mains में क्या होना चाहिए? You're saying mix हो? So So like एक section होता है उसमें okay. आपका live barbecue आ सकता है, कटाकट तवा, you know, like very nice. We do these live stations जिसमें तवा कीमा होता है, Okay. and then these चटखार pieces होते हैं. Okay. So all of these, then also live कढ़ाई भी कर सकते हैं. हमारे पास 3-4 किस्म की different chicken कढ़ाई है. And then if you want to go in mutton, that's another thing. Again, mutton kunna is always there. So and mutton is always also there. So we do a live tandoor. So it's up to you, whatever you want to choose, from batter to, you know, anything you want, anything you wish for, anything you like. उसमें भी vegetarian दे सकते हैं. आलू भाजी चने पूरी का live station with pature and पूरियां बन रही, पराठे बन रहे. All of this we've been doing. Okay, this I think ये देसी menu के लिए सही है. I'm gonna stick with continental for my event. ठीक है. So let's maybe pastas हो जाए. Let's go with something like जैसे lasagna type नहीं होता, but shepherd's pie हो जाए. Let's go with shepherd's pie. ठीक है. Let's do Asian cuisine कर लेते हैं. What do you suggest? दो क्या चीजें होनी चाहिए with rice? तो हमारा थाई कोकोनट करी एक है, that is so amazing. I mean, जो खाता है ना वो बोलता है ये तो आप मेन्यू में रखें. मेरे तकरीबन हर मेन्यू में थाई कोकोनट करी होता है. Okay. That's one of our most popular. Then we're doing the sweet and sour chicken, which everybody loves, kung pao chicken. Okay. सबको ये and then we do these wok style Asian noodles also with you know, like a or chili. So that's also really nice. So again, I really love. अगर कितने लोग आप कितने लोगों की बात करो तो 200. Let's stick to 200. ठीक है, सही है. So live भी कर सकते हैं, बुफे में भी लग जाती हैं चीजें, and then live भी बन रही होती है. Okay. I like the concept कि लोग घूम रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कहीं पे कोई स्टेशन है. So we could do an Asian wok station जहाँ पे आपकी live noodles हैं, kung pao chicken है, Thai coconut buffet में लगा, you know, all of this. So yeah. So we have 3 Asian rice हो गए, साथ 2 curries होगी. We have the pasta, we have the shepherd's pie. Let's say हम 5 भी choose करते हैं. And now for the desserts, I would say कि give me your best 5 desserts. Dessert bar का कोई भी best हो जाए. तो उसमें से what do you suggest? 5. हमारे जो सबसे ज़्यादा popular और easy to eat also वो हैं trifles होते हैं, again small short glasses में. So हमारा Nutella trifle है, एक biscotti trifle और एक tiramisu. Okay. ये हमारे and red velvet pastry. Okay. ये सबको बहुत लग रहा. अभी कल मैंने एक नई चीज ट्राई की थी with काजू. तो एक small brownies और ऊपर उनके काजू से हमने उनकी frosting की हुई. अच्छा, I'm not very into baking and desserts too much. तो उसका जो सही ingredients को सनिया करती है. But they were so amazing कि कोई हद नहीं. So if you want like a dessert table, so आपके 4 मीठे ऐसे हो सकते हैं और उसके साथ आपका we do have गाजर का हलवा and you know winters अगर हैं तो सारे हर किस्म के हलवे यूज हो सकते हैं. और अगर English करना है, so the trifles are amazing. Milk cake is amazing. This coffee pastries are just to die for. So all of this can like 5-6. Now let's say okay, what am I expecting in terms of what you will be charging per head for this menu, for a menu like this? अच्छा, so now again हमजा costing करनी बहुत जरूरी होती है क्योंकि every time जैसे आपने shepherd's pie डाला तो मुझे उसकी again not done this before तो मुझे उसकी तो इसी cost करनी पड़ेगी. But roughly around, and did we add any desi in it? No, हमने कुछ mutton में नहीं कुछ तो हमने किए. इसमें starters हैं, soup है, salads हैं,
सैलड भी 3 सैलड्स कर लो, and then 4 I think हमारे कॉन्टिनेंटल थे, एक पास्ता, राइस एंड, है ना. So this would be roughly around 2,800 per head with Quite, all the desserts. okay, which is quite decent. Because आपने mutton, everybody has to understand that when you do seafood and mutton, Yeah. and you know, so that's really expensive. And again, the number of people. Because आपने कहा 200, अब Yeah. यही menu आप बोलो 100 से कम में दो, तो it will be 3,500. Okay. I can't do it for. Okay. Okay. अच्छा, आपने जो ये अपने menus हैं, do you have set menus? Let's say I approach you as a client. You have these set menus कि इतने के ये है, इतने You इसके have a one dish में है chicken का, mutton का. We have एक अपना हमारा एक mixed menu है, वो भी है. But कभी बहुत रेयर होता है कि लोग बोले हमें यही मेन्यू चाहिए. अब मेन्यू वो चूज करें, इसमें ये ऐड कर दें, इसमें ये कर दें. So then मेरे लिए ज़्यादा आसान होता है to customize it. I'll show the whole list to the client and they can pick and choose. That's easier for me. But yes, we do have packages also. Okay, do you have PDF of your menu so that I can share it later on with the students? Okay, I'll send it to you. Link हो जाए कोई भी. Okay. ठीक है. We're done now with the session. Thank you so much. I think I'll go with you for the catering of my event. I think price is very reasonable. अच्छा, now students are asking questions और उसमें से पूछ लेते हैं. सबसे पहला question था for Haj का. Kindly convey my question to her. I want to open a cafe. Since she is experienced, can we or should we start a restaurant cafe? हम कह रहे हैं मैं student हूँ, मैं as a student start कर सकता हूँ restaurant cafe. Can it be managed? Question बस ये कि मैं as a student start करूँ कि ना करूँ. Of course, if your product is nice, haven't you seen what Smash Burgers has been doing? Yeah. I think it's a success story. He's like 15-year-old and he's studying. So that's just one. I would really advise कि एक focus करो एक product पे. Okay. If you want to start up, so I don't know, could be biryani, could be burgers, could be hot dogs, could be कुछ भी जो भी आपको पसंद है और आपको अच्छा बनाना. अगर if the taste is good, if the location is good, and you can market it well, and then luck obviously is always a factor. So then why not? Of course. Yeah, true. मैं जानता हूँ like एक ना इधर कैंट में आरे बाजार में ना गन्ने की शॉप है, गन्ने की जूस वाली. सिर्फ गन्ने का जूस बेचता है. And one time I sent my driver और उसने उससे पूछा कहता आपकी मंथली कितनी इनकम हो जाती है. It's like 5-6 lakh profit हो जाता है. So even if you stick to one thing and if you're really good at it, तो उसमें भी profits आप निकाल सकते हैं. हमजा वो जो उस दिन हम लोग गए तो I wanted that waffle cone. Yeah. So I also asked वेटर को, मैंने पूछा मुझे नहीं पता उसके नंबर्स कितने सही है या एक्यूरेट, लेकिन उसने जो नंबर बताया मुझे समझ डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि सीरियसली. बट लाइन लगी हुई थी, क्राउड वाज, आई थिंक दे वर मेकिंग 5-6 lakhs in a day. Yeah, okay. I'm like, in a month? He said, no, in a day. I'm like, chalo. And that's again one product. You really, you know, आप उस पे, I feel कि हम खुद at Sweet Affairs कभी कभी क्योंकि हम इतने शौकीन है खाने के, तो हमने इतनी चीजें डाल देती हैं. ब्रेकफास्ट हमारा मेन्यू इज अमेजिंग बिकॉज वी लव ब्रेकफास्ट. सो ऐसे नहीं करना चाहिए. आपको एक प्रोडक्ट पे आई थिंक फोकस करना चाहिए व्हेन यू आर स्टार्टिंग अप समथिंग. डोंट स्कैटर्ड मत हो, बट डेफिनेटली डू इट. कहते हैं वो होता है ना, इट्स कॉल्ड न्यूयॉर्क सिंड्रोम. वो होता है कि आपके जब इतनी ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हो, यू एंड अप चूजिंग नथिंग बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाते हो. सो यू शुड हैव लाइक लिमिटेड ऑप्शंस, आई बिलीव. एंड मानक तो अपना बिजनेस प्लान कर लो. डोंट बोरो मनी, यू नो. एक दफा स्टार्ट करने से पहले डोंट जस्ट थोड़ा सा उसको ट्रायल कर लो, बट टेक अ रिस्क. या ऑफ कोर्स, डेफिनेटली. What about the minimum budget to start catering business को start करने के लिए minimum budget क्या होना चाहिए? But I thought of this question and I really couldn't come up with an answer because again with us it was very different because Sweet Affairs already. But cost निकालो ना, again depending on the menu and what do you want to do. अगर आपने घर से करना है तो different. अगर आपने small scale पे करना है that's a different thing. अब आपको बड़े scale पे करना है तो obviously equipments are very expensive. फिर आपका staff होएगा, आपका rent actually kills you. If you have your own property and you can start on that property, nothing like it. Like even if you want to open a restaurant और आप अपनी property पे आपको rent नहीं देना पड़े, that's I think a very, what do you think? Rents आपको काफी because वो आपको आपने earn किया नहीं किया.
ट्रू, आई थिंक शुरू में हमने जो यूज़ किया था अपने घर का किचन यूज़ किया था बिजनेस स्टार्ट करने में। एंड शुरू में ये था कि होता था ना कि जैसे घर का खाना बन रहा है तो उसमें आप एक्सपेरिमेंट करो, टेक पिक्चर्स ऑफ इट एंड अपलोड इट ऑन योर इंस्टाग्राम या फेसबुक, ताकि आपको आपकी फ्रेंड्स की इंक्वायरीज आना शुरू हो जाए। आपको पहले आपको बिजनेस आपके सर्कल से मिलेगा एंड देन लेटर ऑन आप वो आगे वर्ड ऑफ माउथ से इंक्रीज होता रहेगा। I think that's something that Yeah. makes more sense. Yeah. Is there any room for negotiation? अच्छा, let's say हम 2800 पे हमने डिसाइड कर लिया है, अब इसमें मैं नेगोशिएट करता हूँ, let's say I start negotiate. So I'd say let's say I could मुझे रेट ये मिल रहा है, very high. देखो, I can always give a very high quote. होता है, obviously होता है, बहुत negotiate करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन मैं जान के कोई ज्यादा quote देना कुछ नहीं समझती कि मैं जान के ज्यादा दे देती हूँ और फिर उसको कम कर दूंगी. You know, that is like really boring of time. So yeah, there's always a है उसमें गुंजाइश होती है, but मेरे पास again depending ये भी है, people and the menu. you're right. I think आपको जैसे if you're keeping let's say 2800 3000 तो मुझे होगा कि you are giving me quality food as well. So price के साथ लोग quality को भी associate करते हैं. अगर आप मुझे Yeah. अगर आप ये मुझे मेन्यू कह दो कि मैं 2000 रुपीज में हमजा आपको ये मेन्यू दे रही हूँ, तो आई विल लाइक कि शायद मे बी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज है या कुछ इस तरह की चीज। कॉम्प्रोमाइज है. आई रियली थिंक कि लोग समझ इस बात को कि अगर आप एक अच्छे केटरर पे जाना चाहते हो, आपका इवेंट आप करना चाहते हो कि फैबुलस इवेंट हो, क्वालिटी वाला इवेंट हो, तो आपको यू हैव टू पे द प्राइस. व्हाट इज रॉन्ग विद ऑल ऑफ अस? हम लोग किसी भी सर्विस की प्राइस क्यों नहीं पे करना चाहते? You know, you go to America, पे आप बोलते हो first world country में, everybody is paying this. Somebody said this to me recently and it made sense कि आपका जो वैल्यू है वो आपको एक सर्विस दे रहे हैं, आप उसको क्यों नहीं टिप करते हो? टिप हिम ना, he providing you a service just because उसको एक सैलरी मिल जाएगी, नहीं. ये सारी सर्विसेज के लिए there is a charge and आप अगर करोगे ये तो फिर आपको क्वालिटी मिलेगी, फिर आप नहीं कंप्लेन कर सकते आपको क्वालिटी भी मिलेगी. अब अगर मैं आपको बोलता हूँ अच्छा जस्ट टू गेट द बिजनेस आई से कि हाँ 2000 में कर, एंड ऑन द डे ऑफ योर इवेंट मैं आपको फॉर एग्जांपल कोई भी एक आइटम है जो महंगा वाला है वो मैं आपको इतना इतना सा दे रही हूँ, तो कहीं तो मुझे अपनी कॉस्ट कवर करनी पड़ेगी ना, मैं अपनी जेब से क्यों लूंगी पैसे? सो व्हाट आई विल डू इज मैं बोलूंगी हाँ मैंने मटन कुन्ना तो लिख दिया, लेकिन इतना ही होगा कि बस वो 4-5 लोग 20 लोग खा के फिर खत्म हो जाएगा, और आप क्या करोगे उस वक्त? तो आप बिजी होगे. सो आप ऑनेस्टी से अगर कोई काम कर रहे हैं तो यू डेफिनेटली शुड पे फॉर द सर्विस. एंड ऑल्सो से आपने मुझसे एक और क्या बात बोली थी? हाँ, एक और मुझे समझ नहीं आती कि जब बहुत कम प्राइस में इतने मेन्यूज रोटेट हो रहे होते हैं, तो खैर मुझे कभी मैंने कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन मेरी कॉमन सेंस बोलती है where are they getting their ingredients from? मेरा मटन वेंडर से मैं ले रही हूँ, जो वेंडर मुझे एक सर्टेन प्राइस पे पे कर रहा है, जिसके ऊपर मैंने रिसर्च की हुई कि वो किस तरह वो कर रहा है, या चिकन का वेंडर है या वेजिटेबल्स का वेंडर है. मैंने चूज किए मैं बाय द वे अपने वेंडर्स, और मैं उन्हीं से काम करती हूँ क्योंकि उनकी क्वालिटी मैंने चेक की हुई. तो अगर आप कहीं और से पता नहीं कहीं और से चिकन, और मैं कोई चीज बाय द वे मेरे साथ एक और भी, वी डोंट फ्रीज स्टफ. मैं कोई स्टोर नहीं करती. अब मुझे नहीं पता आगे जाके करना पड़ जाए, अगर अचानक से बैक टू बैक आ जाए तो प्रॉब्लली, बट अभी मेरी हर चीज मेरी बाइंग बहुत फ्रेश है. मुझे आपने ऑर्डर दिया हफ्ता 10 दिन पहले, तो 200 लोगों का इवेंट 15 दिन पहले, तो मैं उस इवेंट के करीब अपनी परचेज करना शुरू करती हूँ ताकि एवरीथिंग इज रियली फ्रेश. ये नहीं कि आज कम रेट में मिल रहा है तो मैंने फ्रीजर भर के, मे बी बिजनेस सेंस यही होता है, क्योंकि आई ऑल्सो बिलीव, ये प्लीज लिख लें कहीं, प्रॉफिट इन केटरिंग बिगिंस फ्रॉम योर परचेज. यू हैव टू बी वेरी वाइज कि आप कहाँ से परचेज करो, बट दैट डज नॉट मीन कि आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करो. मेरा तो मुझे किसी ने तो ये भी सजेस्ट किया था कि जैसे मटन बहुत ज़्यादा चलता है तो अपनी जैसे बकरियां ले लो और फार्म में रख दो वहाँ पे. तो कहता है कि if you wanna, जो कि मैंने एक बार मार्की के साथ देखा था, व्हाट दे डू इज के बकरियां खरीदते हैं एंड लो रेट्स में एंड उनको सारा पालते हैं, देन उनको फिर ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं. तो मैंने उससे ही कहा था कि तुम 1500 में 1400 में कैसे मटन दे रहे हो? तो ही टोल्ड मी कि ये हमने अपनी कॉस्ट इस तरीके से हमने काम किया कि हम लोग like if you can grow your own vegetables and that would be wonderful. My dream would be that I'm growing my own vegetables and using everything on my own, but you needed so many other resources for it. Okay, this is an interesting question. Next question, जैसे 100 लोगों का इवेंट है, हम राइस कितनी क्वांटिटी में रखें, बारबेक्यू कितनी क्वांटिटी में रखें, ग्रेवी कितनी क्वांटिटी में रखें,
ओवरऑल क्या तो मीट? इसका एक एक्चुअल फॉर्मूला है, ठीक है ना। आपका जो मीट है ना, मैं उसको तकरीबन मैं थोड़ा हायर साइड पे रखती हूँ, 350 to 400 ग्राम्स पर पर्सन। ठीक है। सो आपको मेन्यू के हिसाब से, फिर आपके मेरे शेफ्स डू अ बेटर जॉब एट दिस, बट इतना मीट होना चाहिए 350, वरना 250 या 300 ग्राम्स के बाद पेट भर जाता है। बट थोड़ा सा मैं हाई रखती हूँ, सो मेरा कभी खाना कम नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। और राइस की कितनी क्वांटिटी, वो भी पूरे मेन्यू पे डिपेंड करता है कि एक बंदा कितना, मतलब आप खुद सोचना, आप एक इंसान हो, एक प्लेट है आपके पास, आप जितना भी खा लो, तो एक पोर्शन ऑफ राइस एंड प्रोटीन, आप उसके बाद यू नॉट गोइंग टू फील हंग्री, एंड देन द डिजर्ट। तो उससे आप मेजर करते हो योर शेफ्स एंड योर फूड कॉस्ट, उससे ही सही इतना निकलती है। But this is true for only for Lahore and maybe Islamabad, but not for small cities. Lahore and then women, maybe if it's a event where there are only women, तो उससे बड़ा फर्क है। अगर सिर्फ अभी हम लोगों ने एक बहुत वीआईपी इवेंट किया, तो उसमें सारे ये मिनिस्टर्स और सेनेटर्स और इस तरह के बहुत वीआईपी सिर्फ मर्द थे, कोई 70, then of course the portion will, then they're like men, so इन बातों को हम देखना पड़ता है हर इवेंट पे। लेकिन एक एवरेज 350 grams per person मीट के हिसाब से I can tell you that's enough. So Goda mein it's 800 to 1 kilo per person. That I can tell you. Oh God, need to get to Sargodha. Hey Asma, Yeah, this depends. It's a good question, but yes. I'm from Gujranwala, and वो पूछे हमने कोई crockery cutlery Gujranwala से लिए, since Gujranwala is very मशहूर for that crockery and cutlery. I went there, and Ali नाम का एक बंदा, I don't know the name of the shop, but उनसे मैंने अपनी काफी अच्छी चीजें दी, कस्टमाइज भी करवाई, सिल्वरवेयर अपना, और कुछ एक आधा कोई फ्रायर था, and you know cups and everything. So I got all of those from him. He was very good, and prices भी I found कि लाहौर से थोड़ा सस्ता था. So of course you have to see ना कहाँ से हर चीज सस्ती मिलती है, अच्छी क्वालिटी मिलती है, तो फिर go for that, because वरना फिर कैसे आपका प्रॉफिट बनेगा। वहाँ का क्वेश्चन है कि अगर आपकी स्पेशलिटी नहीं है कि आपको फूड बनाना नहीं आता, तो आपको क्या आउटसोर्स कर देना चाहिए फूड, और शुड Of course, business. 100%. I'm a chef, so I love to cook and I love to eat, but I'm not a chef. Neither is Sanya. Okay. But we are good entrepreneurs, and that's what we are doing. I'm running. So I come from an industry, so I think it's in my blood to this business. जो भी हो उसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा, तो आप बेचो कैसे? So I know food, how it's made and everything. I'm not a chef. आपको नहीं आता, it doesn't matter. You should have the sense कि आपका business कैसे run करना है. You should know how to hire the right people then. आपकी salaries आनी है, तो वो कहाँ से आनी है? हर month fixed cost है, वो कहाँ से पूरी होना है? You have to run it like a business. Just hire the right people. Okay, there's another student saying कि मैं पहले से एक business run कर रही हूँ. She is saying कि मैं Chinese, Italian and Indian Anything else? cookies and brownies, and she's saying मैं follow me on Instagram. She's saying Nisa's Kitchenette. Alright, okay, we will follow you. इंशाल्लाह आप link अपना share कर दो chat में, that would be better. With all the cost of outsourcing, managing, arranging, how do you manage your profit? अच्छा, इतनी जब cost आती है outsource करना, manage करना, arranging करना, what is the profit margin? I think that is a better question to ask. कि हम profit margin कितना रखते हैं? मेरा तो ख्याल से I keep it at like cost अगर जैसे let's say 1,000 है, तो I keep it at 2,000 या उससे थोड़ा ज़्यादा. So it's like 100%, 150%. If you get away with it, so it's fine. But I think I mean, normal, I think for every business, 30% is a good margin. I mean, if you can get away with 100%, and होता है ऐसे लोग, एक दो लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा हमें ना आपसे डिस्काउंट चाहिए, आप बता, आपने बस हमें क्वालिटी चाहिए, तो they didn't negotiate at all. If you can get away with something like that, then it's fine. But 30% is an average profit जो आपको, इसके बगैर अगर आपका इससे कम हो रहा है, तो then you're doing something wrong. And also क्या फायदा नहीं है फिर, क्योंकि आपने अपने ओवरहेड्स भी तो करने हैं ना. आपके ओवरहेड्स आपके वो सब, तो 30% पे तो आपको अपना प्रॉफिट रखना चाहिए मिनिमम, उससे अबव जितना. So I want to ask, special requests जैसे आते हैं, की आती है, vegan food आता है, allergies का आता है. So do you work on that as well during the catering of the event? ज़्यादा तो लगता है
ये होता है कि डाइट वाला फूड, लेडीज होती है ना, हमें थोड़ा सा हेल्दी कीटो वाला फूड चाहिए. Like I said, हमारा माशाल्लाह से we can do anything. And क्योंकि हम लोग का अभी आया ना, जैसा वेजिटेरियन है, कुछ किसी की शादी थी उस पे इंडियंस आ रहे थे, so पहले की बात है, तो हमने पूरा एक वेजिटेरियन सेक्शन उनके लिए डेवलप किया था, you know, with cottage cheese and tomatoes and paneer, and then also आलू की भाजी, भिंडी, इस तरह करके जो दाल, खट्टी दाल and all of that. So yeah, allergies, gluten free. Gluten में वैसे अभी मैं इतना नहीं आएगा, किसी ने बोला नहीं केटरिंग, क्योंकि इतने बड़े फंक्शंस पे ये तो नहीं होता. But then you can keep something like sorted vegetables हो गई, या कुछ एक थोड़ा बहुत कुछ रखे ताकि वो कुछ खा सकें. कुछ लोगों को सी फूड से एलर्जी होती है. अच्छा, I think we're stuck. आपकी आवाज आ रही है, that's fine. So many items I किस तरह distribute है, not only for rice. अजीम, ये ना मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है ऑलरेडी, तो आई थिंक उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से बताया, बिकॉज इसमें सारी हमने कॉस्टिंग निकाली हुई है. आई थिंक अभी हमें अगर इस तरह का क्वेश्चन है उसको भी हमें कॉस्टिंग निकालनी पड़ेगी, पहले चीज़ें डिवाइड करनी पड़ेंगी, तो इट्स बेटर दैट आप वो लेक्चर देख लो. वो सारा केटरिंग वाला जो है ना, उसमें 2 और लेक्चर्स हैं, तो उसमें ये पहले से आंसर हुआ है. Any more questions, guys? I think Asma's back again. I think कुछ इंटरनेट का कोई मसला चल रहा है आज. पाकिस्तान में ना आई थिंक कहीं भी इंटरनेट नहीं सही. मुझे भी, मैंने भी कनेक्शन चेंज कर करके थक गया हूं. हर वक्त कुछ नहीं, हर थोड़ी देर बाद कुछ ऑफ है. So and I was just I don't know हम लोग कहाँ पे कट ऑफ हुए. But question, let's take just one last question. ठीक है, अगर let's suppose एक कोई इवेंट प्लानर या आपका जो क्लाइंट है 2 केटरर्स को करता है, आई थिंक लेट्स से मास्टर टाइल्स वाले में 2 केटरर्स थे, सो आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं जब 2 केटरर्स हों या कुछ इस तरह? नहीं, सेक्शंस डिवाइड किए हुए थे. उन्होंने हमें बता दिया था कि आपने सिर्फ इतने लोगों को केटर करना है और इतने ही अमाउंट ऑफ पीपल को केटर करना है, इससे ज्यादा आपने इस सेक्शन से बाहर नहीं जाना और इतने लोगों से ज्यादा सर्व नहीं करना. तो हम उतने ही रहते. और देन अगेन लाइक आई सेड बिफोर, उसके डायनेस्टी कर रहा था, सो डायनेस्टी के मैनेजर्स एंड ऑल, सो वी रियली गुड फ्रेंड्स एंड आई मीन गुड ऑन गुड टर्म्स. वो मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, आई रियली रिस्पेक्ट देम अ लॉट. तो इट वर्कड आउट. अगेन हमारा शुरू में ही हो गया था. माय टीम वाज ऑर्डर्ड बाय मी कि कुछ चक्कर ही नहीं है, यू हैव टू बी टू वर्क एज वन टीम. एंड उनकी तरफ से भी यही ऑर्डर हुआ था. तो कभी भी मुझे कोई चीज चाहिए होती थी, उन्होंने कभी ना नहीं की. सो it worked out really well, mashallah. That's really good. And I'm going to sign out now, and thank you so much, Asma. It was lovely talking to you and lovely meeting you. I hope this learned something and this was productive, and wishing you all the best of luck. Take risks, do whatever you want to do. You can just, you know, you're young, follow your dreams. I'm gonna inshallah. मैं Asma का page and every details I'm gonna share it with you guys. And if you guys want to do get your catering run, अगर आप decor खुद कर रहे हो, you want to outsource the catering, you can ask Asma. Take quotations from her. ठीक है. Thank you so much, guys, for joining in. Thank you so much, Asma, again. And I'll stay in touch with you. ठीक है. And we'll collaborate soon. I would done really work with you. all right, okay. Bye. Bye.